8 years older than Sarah. Sarah is 12 years old and her grandfather is 60 years old. How much older is her grandfather? One way to find the difference is to subtract the smaller from the greater age. So, Sarah's grandfather is 48 years older than Sarah. Another way is to use division. Thus, we can say that Sarah's grandfather's age is 5 times Sarah's age. While both methods are correct, in this case, the second method gives us an idea of how many times older Sarah's grandfather is than Sarah. Next, let's say that the population of country A is 50 crores and the population of country B is 25 crores. How much larger is the population of country A than that of country B? When we use subtraction, we find that the difference is 25 crores. So, we say that country A has 25 crores more people than country B. When we use division, we find that the population of country A is 2 times the population of country B. This tells us how many times larger the population of country A is than that of country B. In each of these cases, we have compared using division. In other words, we found how many times larger one thing is than the other. This kind of comparative relationship is known as ratio. It is written in the form of A colon B and is read as A to B. So, the ratio of grandfather's age to Sarah's age is 5 to 1 and is written as 5 colon 1. Similarly, the ratio of the number of people in country A to the number of people in country B is 2 to 1. What this means is that the population of country A is so large that for every one person of country B, there are 2 persons in country A. Let's say that in country A, the number of females is 24 crores and the number of males is 26 crores. What is the ratio of females to males in country A? ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज रेशियो प्रोपोर्शन से रिलेटेड। तो इन्होंने बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ फीमेल्स टू मेल्स इन ए कंट्री ए। इन्होंने बोला कि नंबर ऑफ फीमेल्स 24 करोड़ है, नंबर ऑफ मेल्स 26 करोड़ है। तो इन्होंने बोला कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ फीमेल्स टू मेल्स इन ए कंट्री ए। तो ए कंट्री में आपका दोनों का रेशियो क्या बना है 24 रेशियो 26। जो हम दो डॉट लगाते हैं, उसमें डॉट लगाते हैं, बिंदु लगाते हैं, उसे कहते हैं रेशियो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका चैप्टर 7 है 5th क्लास कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इसका सेकंड नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। Ratio is generally written in its simplest form, that is, such that the numerator and denominator have no common factors except 1. In this case, we divide the numerator and denominator by a common divisor and reduce the ratio to its simplest form. So, the ratio of females to males in country A is 12 to 13. This means that for every 12 females, country A has 13 males. Notice that there is no common factor of 12 and 13 except 1. This apartment building has a total of 16 apartments. 6 apartments are unoccupied. What is the ratio of unoccupied apartments to the total number of apartments? What is the ratio of unoccupied apartments to the total number of apartment? Total number of apartment 16 है, unoccupied apartment 6 है। तो कहते हैं इसका रेशियो बताना क्या होगा। अनऑक्यूपाइड पहले मांगा है, फिर टोटल मांगा है, तो 6 रेशियो 16। तो दोनों ही 2 की टेबल से कट रहे हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, तो 3 रेशियो 8 इसका आंसर होगा। अब हम चेक करते हैं, कंटिन्यू करते हैं बेटा। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ अनऑक्यूपाइड अपार्टमेंट्स टू द टोटल नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स?
To find the ratio of unoccupied apartments to the total number of apartments, we take the number of unoccupied apartments as the numerator and the total number of apartments as the denominator. We then reduce the ratio to its lowest form. So the ratio of unoccupied apartments to the total number of apartments is 3 to 8. नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्केट बोर्ड्स टू द नंबर ऑफ हॉकी स्टिक्स। पहले उसने स्केट बोर्ड बोला है, फिर उसने हॉकी स्टिक्स बोला, उसका रेशियो बताना है। तो पहले हमारा स्केट बोर्ड क्या है 3 और हॉकी स्टिक्स कितनी है 6, तो 3 रेशियो 6 हो जाएगा। 3 1 3 3 2 6, तो 1:2 होगा इसका आंसर। देख लीजिए 3:6 हो गया, तो 3/6 किया, इसको एक ही टेबल से डिवाइड किया 3 3 से, 3 1 3 3 2 6, तो आंसर इज 1:2। सेकंड में बोलते हैं हॉकी स्टिक्स दी है और नंबर ऑफ बॉल्स दी है। हॉकी स्टिक्स कितनी थी हमारी 6, बॉल्स कितनी है 8, तो 6:8, 2 3 6, 2 4 8, 3:4, इसका आंसर क्या आएगा 3:4। बिल्कुल ठीक है ये हमारा आंसर। तो सब बच्चों को क्लियर होना चाहिए बेटा, मैं आपको ब्लैक बोर्ड से समझाती हूँ डीजी में ही। इसने बोला रेशियो ऑफ नंबर ऑफ हॉकी स्टिक्स, हॉकी स्टिक्स कितनी है 6, फिर बोला उसने बॉल्स, बॉल्स कितनी है 8, तो 6:8 लाइक दिस, 6/8 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एक ही टेबल से डिवाइड करना है हमें। 2 2 से क्या 2 3 6, 2 4 8, तो 3:4 आपका इसका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्टिविटी इज, सब बच्चों को क्लियर हो रहा है? अब ये बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ द नंबर ऑफ स्केट बोर्ड। टोटल नंबर्स बतानी है पहले। टोटल नंबर्स कितनी होगी 6 और 8, 14 14 15 16 17। 17 को स्केट बोर्ड से करना है, 17 हमारा टोटल आ गया एंड स्केट बोर्ड हमारा 3 आ गया, तो 17:3 इसका आंसर इसलिए होगा क्योंकि हमने इन तीनों आइटम्स को प्लस कर दिया। 6 और 8 कितनी होती है 14 14 में 3 स्केट बोर्ड प्लस की 17, तो इन्होंने पहले टोटल नंबर ऑफ आइटम मांगे 17, फिर इसने बोला स्केट बोर्ड हमारा है 3, तो शो आंसर में देखिए 17:3 आएगा इसका आंसर। बिल्कुल ठीक है ये हमारा आंसर। सब बच्चों को क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट देखिए आपका है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रेड बॉल्स टू द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स। तो इन्होंने बोला है कि रेड बॉल्स कितनी है और ग्रीन बॉल्स कितनी है। रेड बॉल्स कितनी है 4 और ग्रीन बॉल्स भी हमारी बॉल्स में देखिए रेड 4 है और ग्रीन भी 4 है, तो 4:4 हो गया, तो 1 1 में डिवाइड हो गया, तो 1:1 इसका आंसर होगा। बिल्कुल ठीक है जी हमारा आंसर। सब बच्चे ध्यान दें, इन्होंने रेड बॉल्स मांगी थी कि 1 2 3 4 ये रेड है, ये 4 बॉल ग्रीन है, तो 4:4 4:4 4 से इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉल्स टू द नंबर ऑफ आइटम्स। सेम बात है, बॉल्स कितनी थी हमारे पास 8, 4 ग्रीन 4 रेड और टोटल नंबर आइटम हमारी थी 17, तो 8:17 पहला आपका आंसर होगा। बिल्कुल ठीक है जी हमारा। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चों को क्लियर हो गया? तो ये थी हमारी एक्टिविटी। Importance of unit in finding ratios. Fish bowl A has a capacity of 1,500 milliliters. Fish bowl B has a capacity of 2,000 milliliters. What is the ratio of the capacity of fish bowl A to the capacity of fish bowl B? इन्होंने बोला है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कैपेसिटी ऑफ फिश बाउल ए एंड कैपेसिटी ऑफ फिश बाउल बी। तो ए में कितना था 1500, दूसरे में था 2000,
We reduce the numerator and denominator to their simplest forms. So, the ratio of the capacity of fishbowl A to the capacity of fishbowl B is 3 to 4. Now, aquarium A has a capacity of 6 liters and aquarium B has a capacity of 4,000 milliliters. What is the ratio of the capacity of aquarium A to the capacity of aquarium B? What is the ratio of capacity of aquarium A to the capacity of aquarium B? तो A में कितना है 6 और B में कितना है 4000. यहाँ पे लीटर है वहाँ मिलीलीटर है तो 6 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 मल्टीप्लाई सॉरी रेशियो 4000 आ गया 6000 और 4000 6000 4000 तो 30 से 30 कट गई 2 3 जा 6 2 2 जा 4 3 रेशियो 2 इसका आंसर आएगा बेटा. If we just look at the numbers, it may seem as though aquarium B has a larger capacity. On looking closely, we find that the units used for measuring capacity are different in the two cases. The capacity of aquarium A is measured in liters, whereas the capacity of aquarium B is measured in milliliters. We first need to make sure that both units are the same, so we convert milliliters into liters. 4,000 milliliters equals 4 liters. We then find the ratio and reduce it to its simplest form. Okay students, आपको क्लियर करवाया था मैंने कैपेसिटी ऑफ एक्वेरियम ए में क्या है 6 लीटर है बी में कितना आ गया 4 लीटर तो 6 रेशियो 4 आ गया. इन्होंने मिलीलीटर को लीटर बना लिया यहाँ पर हमने लीटर को मिलीलीटर बनाकर बताया था आपको तो आंसर सेम है आपका 3 रेशियो 2. This roll of yellow ribbon is 80 centimeters long, and the length of this roll of blue ribbon is 1.5 meters. What is the ratio of the length of the yellow ribbon to that of the blue ribbon? कहते हैं what is the ratio of the length of the yellow ribbon to that of the blue ribbon? Yellow ribbon कितना है 80 सेंटीमीटर और blue ribbon कितना 1.5 मीटर. इसके भी हम सेंटीमीटर में बना देंगे तो आपको इसका रेशियो ऐसे ही करना है. The lengths are in different units, so we convert 1.5 meters into centimeters. We then find the ratio of the length of the yellow ribbon to that of the blue ribbon. कितना रेशियो आ गया 8 रेशियो 15. Hit all the pins by choosing the ball with the correct option. कहते हैं रेशियो 1000 ग्राम 10 किलोग्राम. पहले हम किलोग्राम की ग्राम बना लेंगे तो कितना आ जाएगा 30 और लग जाएगी 30 से 30 कट तो 1 रेशियो 10. क्या आंसर आएगा 1 रेशियो 10. ठीक है ना हमारा आंसर. तो ये हमने अपना क्या यूज किया माइंड यूज किया तो हमें क्लियर हो गया. अब है हमारा द रेशियो 600 टीचर्स टू 3000 स्टूडेंट. तो 600 टीचर्स को 3000 से 2 0 से 2 0 काट दी 6 1 6 6 5 30 तो 1 रेशियो 5 इसका आंसर आ रहा है. अगर हम इसको कॉपी पर अपना करेंगे अपने माइंड से करेंगे तो 600 को 3000 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 0 से 0 कट गई 2 6 1 6 6 5 30 तो 1 रेशियो 5. This is the answer. बिल्कुल ठीक है हमारा आंसर. अब हम देखते हैं नेक्स्ट. 24 मंथ्स है 5 इयर्स है. पहले 5 इयर्स के हम मंथ्स बनाएंगे 5 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 से 25 हो जाएगा 120 आ गया. 20 मंथ्स को 120 से रेशियो बनाएंगे 1 रेशियो 5 तो ले आ रहा. देखते हैं इसका क्या आंसर होगा.
डे में कितने आवर्स होते हैं? 24। तो आपको एक्टिविटी क्लियर होगी सब बच्चों को? सब बच्चे ध्यान से देखें। पहले आपकी ये है कि आपने रेशियो के बारे में क्या सीखा। ए कंपैरिजन बाय डिवीजन इज कॉल्ड रेशियो। रेशियो इज डिनोटेड बाय यूजिंग ए कॉलन A ratio B. It is read as A to B. A ratio B is said to be in its simplest form if A and B have no common factors except 1. Two quantities can be compared only if they are expressed in the same unit. If the units are different, then convert to common unit. Examples: 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000। और 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60। तो ये था बेटा हमारा डीजी में चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, जिसको प्रोपोर्शन एंड रेशियो कहा गया है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इज प्रोपोर्शन। ये भी आपने चैप्टर 7 में सीखा है। Sam is going to a market to buy fruit. He wants to buy apples. Shopkeeper A sells a 2-kilogram bag of apples for 100 rupees, and shopkeeper B sells 3 kilograms of apples for 150 rupees. Which shop is offering apples at a lower price? We can help Sam find out what the apples from these shops cost by looking at the proportion of apples to the specified costs. To do this, we can use ratio. The ratio of weights of apples is 2 to 3. And the ratio of the costs of the apples is 100 to 150, which is equal to 2 to 3. Since the two ratios are equal, we say that these ratios are in proportion. This means that the unit price of apples in both the shops is the same. So, where is Sam likely to get cheaper apples? The answer is nowhere here. Let's look more deeply into the definition of proportions. All quantities A, B, C and D are said to be in proportion if the ratio of the first and the second quantities is equal to the ratio of the third and the fourth quantities. Proportion is represented by the symbol shown. A proportion can be written in different ways, as equivalent fractions, equivalent ratios, and by inserting the symbol of proportion. In all these cases, the proportion is read as A is to B as C is to D. In the example where Sam buys apples, 2, 3, and 100, 150 are in proportion. Let us consider another example. In the first round of a race at school, Sam covers 1 kilometer in 15 minutes and wins the race. Running at the same speed, would he be able to cover 2 kilometers in 30 minutes? The ratio of the distances given in kilometers covered by Sam is 1 to 2. And the ratio of time taken to cover these distances is 15 to 30, which equals 1 to 2. Therefore, the two ratios of distance covered and time taken are equal. This indicates that the four numbers 1, 2, 15, 30 are in proportion. So if Sam continues to run at the same speed, he can cover 2 kilometers in the next 30 minutes. ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा प्रोपोर्शन।